Thank you so much, everybody. इतनी लाइट है कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे वहां पे कौन कौन है ओ बहुत लोग हैं हाय गाइस फर्स्टली टेरिबली सॉरी फॉर द डिले आई नो आपको वेट करना पड़ा है हाँ आपके लिए कुछ भी अरे नहीं यार आई एम रियली सॉरी आई फील बैड अबाउट दैट यू वर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रैफिक दैट वी फेस टुडे or we had to go to multiple points and then reach here. I'm terribly sorry for the delay, but very happy to be here and very happy to be welcomed with such cheers and encouragement. Thank you guys, thank you so much. Thank you so much, Vicky. A warm welcome to you from all of us. Sorry, once I'll just first pay respect. I didn't see that. Love you brother. আরে ভাই সুজয় কি রে बोलना उनकी साइड से बोलते छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति संभाजी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव अब शुरुआत करते हैं So first you start with some Bengali words. In the morning you just learn one thing, Gayakata. So I was discussing one thing with Vicky Kaushal just in the morning that a trailer ta dekhar por one thing we must say, that is goosebumps. Hai ki nahi? So Vicky has learned the exact Bengali term of goosebumps and now he will ask all of you, Gayakata dilo. गायकाटा दिलो मुझे इससे भी थोड़ा ज्यादा बंगाली बोलना आता है मैं ट्राई करूं गलती माफ करना नमस्कार কলকাতা কেমন আছে আমার সিনেমা আসছে ছাবা তাড়াতাড়ি যান পরিবার আর বন্ধুদের নিয়ে যাব কেন কি এ বছর ভ্যালেন্টাইন্স ডে না ছাওয়া দিবস আসছে ঠিক না एकदम हाँ? So Vicky के लिए जोर से हर हर महादेव. So Vicky, I mean I'll ask you just one question because they all are waiting to ask you many questions. So tell me something like it was a very challenging journey for you, both mentally, physically, everything. So if you can tell me, I mean the journey, just in few words. Before the challenges, I would just say that I feel so blessed कि मुझे ऐसा रोल मिला. It's a once in a lifetime opportunity where you literally get to play a god. I come from Maharashtra. I'm a Mumbai born boy and within the Maharashtrians इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति संभाजी महाराज को सिर्फ एक राजा सिर्फ एक योद्धा की तरह नहीं देखा जाता है उन्हें एक भगवान की तरह माना जाता है तो जब मुझे पता लगा कि this is the film I'm going to be doing I really got scared firstly because मुझे पता है कि क्या sentiments जुड़े हुए हैं इसके साथ but the team took a lot of efforts about 4 years of time to bring this film out as authentically as possible, as unapologetically as possible, and as grandly as possible. It took a village to make this film, and our only motive to make this film was to take the story and the glory of Chhatrapati Sambhaji Maharaj not to the entire nation but to the entire world. So 14th of February, please do go and watch Chhava with your kids, with your family, with your friends. And everybody that you know. आपके लिए मेरा क्वेश्चन है कि आपके मूवी में तूफान एक बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस है इसके बारे में आपका कुछ एक्सपीरियंस शूटिंग का कोई मेमोरेबल मोमेंट अगर आप कहेंगे एक्चुअली इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है जो मेरे
हम सब के लिए एक्चुअली जो भी फिल्म से जुड़े थे उनका सबसे स्पेशल मोमेंट था, विच वॉज द कोरोनेशन सीक्वेंस, द राज्याभिषेक। जब उनका राज्याभिषेक का मतलब होता है जब वो सिंहासन पे पहली बार बैठते हैं, उस दिन से वो राजा कहला जाते हैं। तो वो जब सीक्वेंस शूट कर रहे थे तो पहली बात तो जो आप रायगढ़ का जो पूरा दरबार देख रहे हैं वो इतना मेटिकुलसली रिसर्च के बाद हमने सेट क्रिएट किया था। इट टुक देम अ ईयर। जो रायगढ़ फोर्ट में जाके हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर जो है सुबुदा, वो वहाँ पे जाके रिसर्च करके दी एक्चुअल साइज। यूजुअली बॉलीवुड में क्या होता है कि जब हम कोई भी सिनेमा में आप करते हो तो थोड़ा बड़ा स्पेस करते हो ताकि उसमें शूटिंग हो सके। दिस व्हाट वी हैव डन इज द एक्चुअल साइज of the darbar that must have been, including the windows, including the wall art, including the colors, everything. छोटे छोटे जो wall के जो बने हैं, चीजें बनी हैं out of wood and everything else, वो सारे exactly to the point authentic हैं। तो जब हम लोग वो सीन शूट कर रहे थे, there were about 1000 people and हम हमेशा शिव गर्जना करके शूटिंग शुरू करते थे। तो when I was supposed to walk till the throne and climb those stairs and go and sit there, पता नहीं क्या होता था, आई यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग एंड वो पता नहीं क्या एनर्जी थी वहां पे। एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंड कोइंसिडेंटली वाज द डे दैट वी एंडेड अप शूटिंग दिस सीक्वेंस वाज एक्चुअली द डेट 350 years back when the Rajyabhishek of Chhatrapati Sambhaji Maharaj had actually happened. This was 16th of January 1681 when it had actually happened, and we shot this last year 16th of January 2024. So when we knew, we came to know of that कि ये coincidentally is just aligned to the same date, we just felt like there is Maharaj blessing us, you know. Otherwise ये बिना planning के अपने आप होना बहुत मुश्किल होता है. So that scene was very special for us. Vicky, you are quite mixed in your films. I mean, with Chhawa or Uri or Sam Bahadur with the hardcore mainstream films. Now, the two different kinds of films require different physical transformations. How challenging is that? How do you get into that? That's one. Another question is that you are completing 10 years in 2025. So, how do you describe your journey? To answer your first question, see, the thing is, every character comes with its own set of prep. Sometimes it's physical, sometimes it's more on the emotional side, sometimes you have to learn a skill, sometimes you have to learn a language. So it depends on what that character is and how that director is trying to show that story. With Uri, there was a lot of military prep and a physical prep involved. With Sanju, I had to learn a new language. With Masan, it was Banaras I had no clue about, so I had to spend time there and learn the culture over there and the language over there. With Chhawa, there was again a lot of physical prep where I had to put on 25 kilos of weight. I had to learn horse riding for the first time in my life, sword fighting and all sorts of action training for 7 months, and only then we could begin the shoot. So for 7 months, the prep of this film was my full-time job. And sometimes you come across a film like Sujit Das Sardar Udham, where it was just about understanding the state of mind of a person. It was not about physicality, it was not about how he walks, how he talks. It was just to go into the headspace of that person. Sam Bahadur was about how he walks, how he talks, how to bring that charisma. So I think with every character, it's specialized for every character and keeping the vision of the director in mind. Secondly, sorry, what was your second question? 10 years. Yes. Oh my God, it's surreal. It's surreal. मुझे कभी ना यकीन नहीं होता कि 10 साल में जिन डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जैसी फिल्मों के साथ काम करने का मौका मिला। 10 साल पहले जब मसान आई थी, I would have never believed if somebody would have said that you're going to do such a big historical film based on the life of Chhatrapati Sambhaji Maharaj in your 10th year. So it's unbelievable. God has been really kind. You all have been amazingly loving and kind and encouraging. I just want to focus on the present and keep doing the good work and keep doing the work with the good people I get to work with. And hope and pray that audience का जो प्यार आ रहा है वो बढ़ता जाए। आपको इस कैरेक्टर के लिए क्या क्या रिसर्च करना पड़ा, कितने साल लगे रिसर्च के लिए? और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आप आपका सक्सेस और फेलियर कैसे हैंडल करते हैं, मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रहता है? मेंटल हेल्थ, अच्छी नींद कर लो, अच्छा खाना खा लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, स्पेंड टाइम विद द पीपल हु नो यू द बेस्ट. दे डोंट नो यू बिकॉज यू आर एन एक्टर, दे नो यू विद योर pluses and minuses. They tell you your minuses on your face.
There is no formality. Just spending time with them more on the real world than in the virtual world is a good trick to just keep this balance for me. And secondly, the prep of this film, of course, we discussed the physical prep of this film, but otherwise, what happens is, for me, I feel like when you get an opportunity like this, if you don't understand and study the culture, the Sanskriti, the language, and the era, then I think it's a waste of an opportunity. So I sat with Lakshman sir and our writer Rishi Vermani for about 7 months, almost every day, and we would just keep talking, because this is based on a novel by सावंत साहब, शिवाजी सावंत, जिसका नाम भी छावा है. तो मैं किताबें बहुत अनफॉर्चुनेटली कम पढ़ता हूँ बिकॉज मुझे ना मेरे लिए एक्टिंग को मैं थियरी नहीं बनाना चाहता, कॉन्सेप्ट नहीं बनाना चाहता. सो मैं लक्ष्मण सर के साथ बैठता था रोज और उनको कहता था कि आप मुझे समझाओ, आप मुझसे रोज बातें करो. आई विल मीट एंड सिट विद यू फॉर 4 hours every day and we will discuss the world. So for 7 months at stretch he would just sit and we would talk, and I'm from Mumbai, like I said, तो ये हमारे हिस्ट्री बुक्स में भी था. तो it was not like कि मैं बिल्कुल aware नहीं था, but of course there was Lakshman sir to kind of guide me into that world. I just wanted to know, when you are portraying a character which is a representation of a particular region, of a particular history, of a particular person whom you can find only in the history books, so does it add a additional pressure when you are portraying such a character? Ma'am, any biopic has that pressure and that responsibility that, you know, you're portraying a real person. You can't be frivolous about it. You can't take too many creative liberties that, okay, I will play it the way I want to play it. There is a fence, there is a boundary attached to that portrayal. But what was most difficult in this one was that, like I said before, इनको सिर्फ राजा या योद्धा की तरह नहीं, इनको भगवान की तरह माना जाता था. तो जब भगवान किसी को मानते हैं तो आस्था जुड़ी होती है, सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, और वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है कि कल को किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, इमोशंस हर्ट ना हो. बिकॉज जिनके लिए ये फिल्म बन रही है, जो इनसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, इसलिए हमने वो फिल्म बनाई है. तो हमारी इच्छा यही है कि लोगों को कल जब वो फिल्म देखें तो उनको गर्व से लगे कि हाँ, हमारे राजा के बारे में इतना अच्छा उनके लिए एक ट्रिब्यूट दिया गया. और पर वो दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज अ लिटिल स्कैरी. संभाजी महाराज का ऐसा कौन सा ट्रेट है जिसके साथ आपने सबसे ज्यादा कनेक्ट किया हो? मैंने देखो, पहले तो इंसान के साथ कंपेयर किया जा सकता है, इंसान भगवान के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता. तो वो तो भगवान थे. तो पर मेरे लिए सबसे एक इमोशन, एक ट्रेट जो मैं बहुत एंजॉय करता था was the निडरता जो उनकी है ना, जो उनका करेज है. एंड आई डोंट मीन जस्ट द बैटलफील्ड्स, बट अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड्स आल्सो. The way he will take administrative calls, the way he was as a father, the way he was as a brother, the way he was as a husband, the way he was as a son, all of that we have shown in the film. To just play those parts, one thing was there that he was very assertive. I mean, what we could figure out कि वो बहुत assertive होंगे, उनमें बहुत धाड़स होगा कुछ भी करने का. वरना 30 साल की वर्ष तक, by the time he was 30, उसमें to have fought 127 battles and lost none. At the age of 16 you fight your first battle and you win it. 13 से ज़्यादा भाषाएं उनको पता थी, ग्रंथ लिख चुके थे, कविताएं लिख चुके थे, 60 किलो की तलवार चलाते थे. At the age of 21 he had to carry forward the legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj, which is a responsibility which I can't even fathom. All of that, at the end, was this man who was younger than me. And to imagine that just scares me a lot. So I think I can imagine only his courage being so tufani that was inspiring for me, and that I would take it back home with me. লেটেস্ট আপডেট, গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা, আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ.